We saw what happened yesterday. We are the champions of Asia after defeating Pakistan. But this entire tournament, ladies and gentlemen, has been marred with much more than cricket. It has been about a lot of things than cricket on the field. Whether it's the revenge, the reels, the roast, walking away, handshake controversy, a lot happened. A team which won the Asia Cup will be returning home without a trophy. I mean, that says a lot about how this entire tournament was played. The Board of Cricket, of Control of Cricket in India, the BCCI, has decided that they are going to launch a very strong protest against the Asian Cricket Council President, Mohsin Naqvi, for his conduct during the ICC the Asia Cup presentation. In fact, the Asia Cup ended on a controversial note after Indian players refused to accept the trophy from the hands of Mohsin Naqvi, who is also the Interior Minister of Pakistan, the head of the PCB as well. The post-match presentation, which got underway after a delay of 45 minutes, came to an abrupt close after the Indian team put their foot down, refusing to have any sort of interaction with Naqvi on stage. The PCB and the ACC heard the head then quickly just walked out with the trophy. It must be stated that the Asia Cup trophy was nowhere to be seen. Now it has come to light that Naqvi ensured that he walks away with the trophy after Surya Kumar Yadav refused to take the trophy from him. Now, during the post-match presentation ceremony, Aga Khan, who is the captain of the Pakistani team, he threw away the runners-up check as well. So it was full-on drama that ensued, not just in a fantastic match that both these sides played, but also after that. We've been talking about the surround sound, and amidst all this, Aminul Islam, the ACC representative, he was booed by the crowd over the same. Just hours later, Captain Surya Kumar Yadav shared a post on X, and I said, and I'm quoting him here, when the game is done, only the champions will be remembered and not the picture of the cup. All in all, this is the 9th victory of India in the Asia Cup tournament. The Asia Cup 2025 between India and Pakistan was marred with unprecedented controversies, from the provocative gestures, absolutely meaningless, and they were not required. In fact, those kind of gestures from the Pakistani players to the Indian team refusing to take the trophy from the PCB chief. It has been a cup which will be remembered for a lot of things, but just cricket. Let me very quickly just give you a sense of the big controversies that took place as far as the Asia Cup is concerned. Number one, which you are seeing on your screens at this moment, Indian captain Surya Kumar Yadav and the Pakistani skipper Salman Ali Agha did not shake hands at the toss. 3 times India and Pakistan came together, and we did not shake hands after the toss. Now, apart from that, what else in fact happened? Farhan Sahibzada, controversy number 2, his gun celebration, that action was in fact seen as absolutely distasteful, especially from a country which is seen as the safe haven, the harbour of terror, and what happened in Pahalgam in India. Now, controversy number 3, for this cup, Harris Rouse, the aggressive plane crash gesture. It was, I would say, responded by the brilliance of Jasprit Bumrah, but that gesture also was quite distasteful. Then Harris Rouse, provocative 6-0 gesture to the crowd. PCB chief, in fact, demanded immediate removal of the match referee. And, a lot of those things took place in this tournament, which this tournament largely would be remembered for, as I said, for the surround sound more than what happened on the cricket field. Let me very quickly go across at this moment to Mr. Ayaz Memon, cricket commentator, journalist, needs no introduction, and Atul Vasan, former Indian cricketer, is also with us this evening. Thank you so much, gentlemen, for joining us on the broadcast. Let me begin by asking you, Atul, what happened after the match? Do you think that this Asia Cup
with India being the champions, would be remembered for what happened more outside the ground after the match was over, then of course the way the tournament turned out? Oh, of course, I mean, India has been winning so often that I think we'll remember this for the theatrics and the antics of our neighbors, more than the game exactly. But, at this point, let me on the outset, I must compliment Pakistan to actually they actually came to the party. They took the game a slightly notch up and gave us some kind of a tough fight. And I really enjoyed this game. If we would have just won again one-sided, I would have enjoyed it, and I think this kind of theatrics also would have actually been, slightly diminished. But it's been amazing. It's the circus of absurd, I think. But going forward, I think they have just played into India's hand because we are trying to make sure that the world also sees Pakistan for what it is. And it's very hard for us to lobby and get them ostracized. I think they're helping us. And I think they could have taken the moral high ground by just being, civil, because we didn't want to shake hands with them. Just let it be, carry on. But the way they came back, they retaliated in a very churlish, juvenile manner, and they looked really bad. And top of that, can you imagine their interior minister, which is the second most powerful person, and stooping down to these levels? And again, the captain threw away the match twice because he threw the match and the check. And now I bet that he's going to encash the check. PCB needs the money and Pakistan needs the money. Yeah, I mean, it's easy to throw the replica of the check. I'm sure that the real check would be absolutely safe and sound in his pocket when he walks out of Dubai. But let me quickly go across to Ayaz Memon as well. Ayaz said, I just want to understand from you. There are, and Kapil Paji was also with us last evening, and he said, you've won the match. Let's now get over this. Do you think that this tournament, more than cricket, was marred with the surround sound outside, the politics, and of course the sentiments right after Operation Sindoor and what happened in Pahalgam? Most certainly, Ankit. I mean, there's no question about it, because when you look at the headlines, the shows that we are doing, it's not about the match, about the cricket, who made how many runs, who bowled well, who batted well. All the matches that India and Pakistan have played, the focus has been on what else is happening apart from the cricket. And there's lots that happened. So, I think certainly cricket has been the loser in that sense in this tournament. I also think, I mean, just to take we've discussed this we've just been going on. But yeah, right now, I see that the Asia Cup has no future. There are only two reasons. There's only one reason why the Asia Cup is played, which is an India-Pakistan match. We had 3 matches here, and which is a big bonanza for the broadcasters. But it's ended up in a situation where we are now confronted with a situation where you might have Indo-Pak cricket ties, reaching the point of no return. And my fear, my worry is that Asia Cup is over. It was not such a great tournament when you look at all the other teams that are participating. Absolutely. The other teams are all, in a sense, minnows. Now there's a T20 World Cup coming up. It's going to be played in India. It's an ICC tournament. The host country is India. What is the tamasha that is going to happen is anybody's guess. So I think it is absolutely incumbent on the ICC now to put in some codified kind of rules or whatever it is of participation and playing, etc., so that things don't spin out of control. You are right, but there are two sides of view as far as this is concerned. One is, of course, sports should reign supreme when it comes to the ground. The surround sound should be kept out. Either don't play, or then, of course, don't put your positions in a place, players in a place where they have to make these kind of gestures. Can I request both of you to stay on with me? We are getting an exclusive interview from one of the very key, in fact, player in the Asia Cup team of India. And he has been a seasoned campaigner, a man without whom you couldn't have achieved the success that you have. The spin master, Kuldeep Yadav, exclusively spoke to NDTV. Let's take a look. सूर्य कुमार यादव ने कहा, और सब जो एक्सपर्ट्स हैं क्रिकेट के वो कहते हैं कि मैचेस जो है वो बैट्समैन जिताता है, लेकिन टूर्नामेंट जो है वो एक बॉलर जिताता है। और कुलदीप यादव, मैंने आपने से वर्ल्ड कप के बाद भी बात की थी, क्या कमाल के बॉलर, आपको जब मौका मिलता है आप छा जाते हैं। मतलब आपसे आधे विकेट लोगों ने लिए हैं, 17 विकेट, मतलब ये T20 में कितनी बड़ी बात है। और कल आप तो मैच विनर थे, मतलब हम सब की सांस अटक गई थी जब वो 112 पे 1 नज़र आ रहे थे, हम सब की सांस अटक गई थी। नहीं, बहुत अच्छा लगता है।
जब आप ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं और टीम की विनिंग सक्सेस में आपका हाथ हो, उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। ऑब्वियसली स्पेशली मेरे लिए अच्छा टूर्नामेंट था, आप कह सकते हैं इंडिविजुअली, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही अभिषेक की, इतने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की इस टूर्नामेंट में। उसके बाद आपने फाइनल में देखा तिलक ने जिस तरह से बैटिंग की, लाजवाब बैटिंग की, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नोटिस नहीं करते हैं, जिस तरह से अक्षर का रोल जो टीम में था, इंपॉर्टेंट 2 विकेट, वरुण के 2 इंपॉर्टेंट विकेट, तो कलेक्टिवली संजू सैमसंग, शिवम दुबे, कलेक्टिवली हमने ये क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में, और उस तरह से परफॉर्मेंस की है। और ये टीम स्पोर्ट है, हमेशा ऐसे ही रहता है। आप चाहते हैं कि 3-4 प्लेयर टीम के लिए खड़े हों और अपना परफॉर्मेंस करें, तो बहुत खुश हैं इस परफॉर्मेंस से। एक और बात जो है, जो कि पूरे टूर्नामेंट मैंने 30 साल से कम कवर कर रहा हूँ, आप भी बहुत साल से खेल रहे हैं, 30 साल से आप भी खेल रहे हैं, मतलब भले इंटरनेशनल लेवल, ये वाला जो टूर्नामेंट है ना, इतना टेंस, पाकिस्तान, ये मतलब ये समझ में नहीं आया। मतलब ये फैंस भी बड़े परप्लेक्स्ड हैं, हम भी बड़े अजीब, मतलब मेरे लिए भी बड़ी अजीब सी बात है। आप लोगों ने कैसे लिया, वो क्या हुआ, मतलब जो आप लोगों ने बोला कि नहीं लेंगे और फिर क्या हुआ, ट्रॉफी नहीं मिली, कैसे? मुझे इतना कुछ पता नहीं है। और ऑब्वियसली आप कोई भी मैच खेलते हैं तो पहले तो अपनी टीम को देखते हैं कि आपकी टीम किस तरह से है। आप फील्ड पे उतरते हैं तो आप अच्छी क्रिकेट खेलने को देखते हैं और फेयरलेस क्रिकेट खेलने को देखते हैं। आप सोचते हैं कि जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ रही है, जो आपने इतने सालों से आपने टीम के लिए किया है, या फिर टीम ने जो कमाया है, आप वो स्टैंडर्ड नीचा नहीं गिरना देना चाहते हैं, और उसी हिसाब से आप खेलते हैं। और बाकी रिज़ल्ट जो भी आते हैं ऊपर नीचे गेम में हमेशा होते रहते हैं। और जिस तरह से हमारी टीम टूर्नामेंट भी खेली, ऑब्वियसली बहुत से ऐसे टाइट गेम भी रहे। कल का गेम बहुत टाइट था, और पाकिस्तान को 3-3 बार हरा नहीं, बिल्कुल सही बात है। हम अपनी स्ट्रेंथ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम अपनी क्रिकेट कैसे इंप्रूव करें और कैसे बेटर कर सकते हैं। और हर गेम चैलेंज है, और हर गेम में आप इम्प्रूव हमेशा सीखते रहते हैं। कभी आप उसमें फेल भी होते हैं और कभी कभी आप अच्छी चीज़ें अचीव करते हैं, जैसे लास्ट गेम में हमने अचीव किया। तो एज ए टीम तो बहुत कुछ सिखाते भी हैं, ऐसे पल, ऐसे जो लास्ट गेम था बहुत कुछ सिखाया आपको। तो हमने बहुत इन्जॉय किया, और सारे गेम बहुत अच्छे थे। और जो हम सोचते हैं, जो हम बात करते हैं, और जो हमारी टीम की फिलॉसफी है, उस पर हम कायम रहे टूर्नामेंट में, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। 2 सवाल मैं एक साथ पूछ लेता हूँ आपको, कि 3 सवाल ही आपने बोला। एक तो रॉन्ग ऑन पे और लेंथ बॉल पे आप बराबर करते रहते हैं। अपने यहाँ भी, जब कानपुर में भी जब आप 4 विकेट पे प्रैक्टिस करते हैं लेफ्ट हैंड से करवा के भी, या आप अपनी जो प्रैक्टिस में जो कहते हैं, और यहाँ पे रॉन्ग ऑन भी आपके लेंथ को पढ़ने में सभी टीमों को मैंने देखा काफ़ी मुश्किल हो रही थी। एक तो उसके बारे में, और सेलिब्रेट क्या क्या, मुझे काफ़ी पता चला कि काफ़ी आप लोगों ने खूब उछल कूद मचाया। नहीं, बिल्कुल, अगर बॉलिंग की बात करें तो एज ए स्पिनर आप हमेशा सीखते रहते हैं गेम में। आप हमेशा, आपके लिए कभी कभी अच्छे गेम जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते अच्छे गेम, बट इम्पोर्टेंट स्पिनर्स के लिए वही है कि एक जो लाइन और लेंथ होती है, लेंथ की बात करते हैं स्पेशली इस फॉर्मेट में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप दुनिया का सबसे डिफिकल्ट आर्ट करते हैं, लेफ्ट आर्म। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई डिफिकल्ट आर्ट है, वो बहुत क्लासिक स्पिन है मेरी। ऐसे कोई मैं मिस्ट्री बॉलर तो हूँ नहीं कि जो लेफ्ट आर्म। ऑब्वियसली जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत नई थी। अभी आप देखेंगे बहुत सारे चाइनामैन स्पिनर और हर एकेडमी में आपको मिल जाएंगे। और बिल्कुल मैं अपनी बॉलिंग एंजॉय करता हूँ, और मेरा हमेशा मेरा जो रोल है टीम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं उसमें ही सोचता हूँ कि जो मेरा काम है, जो मुझे काम दिया गया है मिडिल ओवर में विकेट निकालने हैं, कभी कभी विकेट मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, बट जो मेरा रोल है, जो हमारा माइंडसेट है, जो एज ए स्पिनर जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, वो अटैकिंग रहना चाहिए। और सबका डिफरेंट रोल है, और मेरा वही रोल है, और मैं उस पर ही सोचता हूँ कि मुझे वही काम है, वही काम करना है। आपकी सिंप्लिसिटी से एकदम मन दिल जीत लेते हैं आप। आगे क्या देख रहे हैं? बस आगे कुछ नहीं देख रहे हैं, आगे फ्लाइट देख रहे हैं। और जश्न भी मनता रहेगा। बहुत बड़ी विकेट, बहुत हमने इन्जॉय किया ऑब्वियसली। और अच्छी टीम को हराते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है, और अच्छी क्रिकेट उन्होंने भी खेली है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि क्रिकेट उन्होंने अच्छी नहीं खेली, अच्छी क्रिकेट खेली। हमें 3 विकेट हमारा जल्दी गिर गए थे, और उन्होंने बैटिंग में भी बहुत अच्छी स्टार्ट की थी, बट वो तो थम गई थी। बिल्कुल जिस तरह से हमारी टीम ने कमबैक किया गेम में, वो बहुत लाजवाब था। हम अपनी टीम की बात करना ज़रूर चाहेंगे। बहुत ऐसे प्लेयर हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, और सबका कंट्रीब्यूशन रहा जिसकी वजह से हमने ये अचीव किया।
और जश्न ऑब्वियसली आप टीम के साथ रहते तो आप जश्न करते रहते, बहुत एंजॉय करते हैं। एनडीटीवी से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। आप हमेशा ऐसे ही खेलते रहिए और देश का सबका दिल जीतते रहिए। थैंक यू सो मच। कुलदीप यादव के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। That's what a sports person is made of. Such, fantastic way that he spoke about his art. He has been an absolute match winner for India, and then also giving the runners-up their credit, saying that they played good cricket, and that's what sports is all about. All right, with that, we are slipping into a very short break. Coming back with much more on the other side. Stay tuned.